गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द पेरेंट्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है CMCJ कॉन्फ्रेंस। तो इसमें जो है 11th जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई है चीफ मिनिस्टर्स और चीफ जस्टिस की। तो इसमें PM जो है उन्होंने एक आर्गूमेंट दिया है, एक सजेशन रखा है कि जो 5 लाख अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं कंट्री में, जो कई सालों से जेल में लैंग्विश कर रहे हैं, तो उनको जो है रिलीज़ करने के लिए जो है कुछ ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि लोग जो हैं वो जल्दी से जल्दी जस्टिस चाहते हैं। ऑफ कोर्स किसी भी स्टेट का भी ये दायित्व होता है कि अपने लोगों को जल्दी से जल्दी जो है वो जस्टिस दे सकें। फिर उन्होंने बोला है कि जो अंडर ट्रायल्स बहुत टाइम से जो है जेल में हैं, और उनको उनको जो है रिलीज़ करने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट जज की कमेटी बनानी चाहिए और ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और हो सके तो उनको रिलीज़ कर देना चाहिए बेल पर। फिर उन्होंने बोला है कि जो कोर्ट की हेयरिंग्स हैं वो ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो कि लिटिगेंट्स जो है वो उसको कम से कम समझ सकें। ठीक है, मतलब लोकल लैंग्वेज में हो सके तो आप जो है लोकल लैंग्वेज में कोर्ट की हेयरिंग्स को कंडक्ट किया कीजिए। फिर उन्होंने बोला है कि ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जो कि ऐसे लॉज को इनेक्ट करेगी जो कि आम जनता आराम आराम से समझ सके। तो हमारी जो है गवर्नमेंट का ऑफ कोर्स और जुडिशरी का, मतलब हमारी पूरी स्टेट का जो है ये दायित्व है कि वो टाइमली और अफोर्डेबल जस्टिस जो है वो हर इंसान को जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये CMCJ कॉन्फ्रेंस क्या होती है? सबसे पहली कॉन्फ्रेंस 1953 में हुई थी। अभी तक टोटल 38 सच कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, और जो ऑफ कोर्स 38 थी वो 2016 में हुई थी। जो ये 39th है, ये 6 ईयर्स के बाद कंडक्ट की जा रही है। अब इसमें होता क्या है कि जितने भी आपके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, इवन जो गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव और जो है आपके जुडिशरी के बीच में ये मीटिंग होती है कि हम कैसे जल्दी से जल्दी जो है वो सैनर्जाइज कर सकते हैं एफर्ट्स को, और जस्टिस को कैसे हम जो है वो सर्व कर सकते हैं लोगों को। तो अंडर ट्रायल्स का भी इशू देख लेते हैं कि एक तो हमारा ये अंडर ट्रायल्स का जो इशू है ये पेंडेंसी ऑफ केसेस से रिलेटेड है, क्योंकि लगभग 4.7 करोड़ केसेस जो हैं वो हमारे अलग अलग जो है हमारी जो अदालतें हैं उनमें पेंडिंग पड़े हैं। तो उसमें से 70,000 से ज़्यादा तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही पेंडिंग है। तो अब क्यों डिले हो जाते हैं, ये डिस्पोजल ऑफ केसेस क्यों नहीं हो पाते हैं? ऑफ कोर्स एक तो वैकेंसी का इशू है, दूसरा कोई अरेंजमेंट ही नहीं है मॉनिटर करने का, ट्रैक करने का कि कैसे जो जजेस की जो है वो हेयरिंग चल रही है। तो एडजर्नमेंट्स मिलती रहती हैं, केस जो है वो डिले होता रहता है ना। तो अब उसको क्या स्टेप्स लिए गए हैं आज तक? ऑफ कोर्स सिर्फ जुडिशरी ही ब्लेम करने के लिए नहीं है, बट गवर्नमेंट की भी गलती है। 40% जो केसेस जो जुडिशरी के पास आते हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड ही होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जस्टिस ऐप बना दी है ताकि जो जजेस हैं वो एक ऐप के थ्रू ट्रैक कर सके कि कितने केसेस जो है उनके पास पेंडिंग पड़े हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट लेवल पर जो है अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं हाई कोर्ट पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हो सकें और जो है वैकेंसी को जो है इशू को एड्रेस किया जा सके। तो वे अहेड इसकी क्या है कि 112 हमारा लॉ कमीशन कहता है कि जज स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है उसको फिक्स किया जाए, उससे नीचे जजेस की स्ट्रेंथ नहीं जाने देनी चाहिए। फिर एक और ऑप्शन है कि हमको ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज को भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, और जो है ताकि नेशनल लेवल पर जो है जजेस की स्टैंडर्ड सिलेक्शन हो सके, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, अभी तो स्टेट लेवल पर जो होती हैं वो एक ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज लेवल पर होने लगे। फिर ये भी कहा गया है कि जुडिशरी जो है उनको एडजर्नमेंट्स जो है उसको गिव अप करना चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करें, एक्सेप्शन बनाएं एडजर्नमेंट को, नॉर्म नहीं होना चाहिए। आसानी से किसी को भी केस एडजर्न करने का जो है वो ना मिले। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैंक कंसोलिडेशन। तो RBI जो है उन्होंने अभी एक रिपोर्ट निकाली है करेंसी एंड फाइनेंस नाम से, और उसमें उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं अबाउट बैंक कंसोलिडेशन। तो उन्होंने बोला है कि अगर आप मर्जर करते रहोगे तो कस्टमर को कम चॉइसेस मिलेंगी, क्योंकि कम बैंक्स हो जाएंगे, बहुत बड़े बड़े कम बैंक्स हो जाएंगे, और जो है जब बहुत बड़े बैंक्स कम बैंक्स हो जाएंगे तो मार्केट में कंपेटिटिवनेस नहीं रहेगी। जो है उससे क्या होगा कि नॉन कंपेटिटिव प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स होगी, लोगों को, कंज्यूमर्स को जो है अच्छे प्रोडक्ट्स जो है वो कम प्राइसेस पर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि वैसे ये मर्जर सही है, क्योंकि इससे कैपिटल बफर ऑफ बैंक्स जो है वो इम्प्रूव होता है, और जो है गवर्नमेंट ओनरशिप जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ भी करने की ज़रूरत है ऑफ कोर्स। और गवर्नमेंट जो है बार बार कैपिटल इन्फ्यूजन तो करती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि जो बैंक्स, जो मर्ज्ड बैंक्स हैं, वो फिर भी अपनी वही पुरानी जो है गवर्नेंस और पुरानी ही जो है वर्किंग पे ही चलते रहें। फिर तो क्या होगा कि आप चाहे जितने मर्जी मर्ज कर लो बैंक, वो भी मर्ज बैंक भी कोलैप्स हो सकता है। तो इसलिए जो है
वो रिस्क कंट्रोल और बेटर गवर्नेंस को जो है आपको लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बैंक कंसोलिडेशन क्या होता है आपको पता ही होगा। जब कोई बैंक जो है वो बहुत सारे बैंक्स को जो है टेक ओवर कर लेता है, या फिर बहुत सारे बैंक मर्ज होकर एक बैंक में या एक ही बैंक बना लेते हैं, तो उसको हम मर्जर कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं। तो ये कंसोलिडेशन किसकी वजह से किया जा रहा है, क्योंकि नरसिम्हन कमेटी थी एक, तो उन्होंने बोला था कि 3 टियर बैंकिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए इंडिया में। 3 से 4 लार्ज बैंक्स हों जो कि इंटरनेशनल लेवल के हों, 8 से 10 नेशनल बैंक्स हों जिनकी हमारी कंट्री वाइड ब्रांचेज हों, और तीसरा बोला उन्होंने लोकल बैंक्स। जो लोकल बैंक्स हैं जैसे कि हमारे रीजनल रूरल बैंक्स, उनको कहा है कि आप सिर्फ लोकल नीड्स जो रीजनल नीड्स हैं उन्हीं को ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स जो है उन्होंने गवर्नमेंट का प्लान बताया है कि वो हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल्स लेके आना चाहते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसको बनाएगा और इसकी कॉस्ट लगभग 17 करोड़ 17.5 करोड़ होगी, और ये इसकी फंडिंग जो है वो 75% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाली है। तो हमारा गोल है कि हम इंटरनेशनल शिपिंग जो है उसको 40% तक उसमें कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करना चाहते हैं, और उसको 70% तक हम 2050 में रिड्यूस करना चाहते हैं। तो फ्यूल सेल्स होते क्या हैं, हमने इसके बारे में कई बार पढ़ा है कि फ्यूल सेल वो डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली ही जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब इस प्रोसेस में अनलाइक कंबशन जो इंजन होते हैं हमारे, जो आपके गाड़ी में चलते हैं या दूसरे, उनमें क्या होता है कि आपके पॉल्यूशन होता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका जो रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है ऑफ कोर्स, है ना। तो इसकी हाई एफिशिएंसी होती है एज़ कम्पेयर टू आपके जो नॉर्मल कंबशन इंजन्स। तो इसको हमको ट्रांसपोर्ट में या फिर इवन बैकअप पावर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप इसको इससे पावर प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हो, और अगर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड फेल हो जाता है तो आप उस पावर का यूज़ भी कर सकते हो, है ना। तो अब ये जो है केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो उसकी वजह से ये ज़्यादा कंबशन इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट है। सिर्फ थोड़ा सा पानी और थोड़ा सी हीट निकलती है एज़ कम्पेयर टू कंबशन इंजन जिसमें बहुत हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, और ट्रेडिशनल इंजन से ज़्यादा वाइबल भी है, क्योंकि रिलायबल भी है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है ना। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ज़ीरो एमिशन, डायरेक्ट डीसी पावर सोर्स है डायरेक्ट। तो आपको क्या जो है एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे में अच्छी क्वालिटी की जो है वो एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स। तो अभी CAG की रिपोर्ट आई है, उसमें बोला गया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन और इन्वायरमेंटल नॉर्म्स की वायलेशन की वजह से जो 2 रामसर साइट्स है वेस्ट बंगाल की, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स और सुंदरबंस, यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ है। तो अब ये ईस्ट कोलकाता वेटलैंड कहाँ पर है, ऑफ कोर्स आपके ईस्टर्न रीजन में है कोलकाता के। लगभग 12,500 हेक्टेयर्स का जो है ये रीजन है, पेरी अर्बन इकोसिस्टम है, और वेस्ट बंगाल के साउथ में और नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट के पास में ये पड़ता है, ठीक है। अब रिपोर्ट कह रही है कि कोई बाउंड्रीज डिलीनिएट नहीं कही गई थी, अनकंट्रोल्ड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड किया गया, जिससे क्या हुआ कि जो लैंड समझ लो कि अगर एग्रीकल्चर के लिए ईयरमार्क था, या फिर समझ लो किसी प्रोजेक्ट के लिए ईयरमार्क था, किसी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए, तो उसका कैरेक्टर चेंज करके उसको जो है उस पर कंस्ट्रक्शन कर दी गई। इवन जो वाटर बॉडीज़ हैं वो ड्राई अप होने लग गई, क्योंकि उसके ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई, तो जो है आपकी जो है ये डिस्ट्रॉय होने लग गया एनवायरमेंटल नॉर्म्स की वायलेशन की वजह से, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0। तो ये अटल इनोवेशन मिशन जो है उन्होंने निकाला है ये चैलेंज, सेकंड एडिशन है ऑफ कोर्स इसका। अब ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन का, और इसमें क्या किया जाता है, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इनोवेशंस हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है और सपोर्ट किया जाता है, ताकि जो हमारे डेवलपमेंटल नीड्स हैं इंडिया की, जैसे कौन कौन से सेक्टर में, एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, इन सब कंटेक्स्ट में जो है इन सब जो है
एरियाज़ में न्यू इनोवेटिव जो है सॉल्यूशंस ला सकें, हमारे स्टार्टअप्स उसको कमर्शलाइज कर सकें, तो उसके लिए जो है इनको सपोर्ट किया जाता है अटल न्यू इंडिया चैलेंज द्वारा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो जिसने तो न्यूज़ में देखा है ये, तो उनको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह से ओपन नेटवर्क लेके आना चाहती है, एक ओपन सोर्स नेटवर्क होगा। इवन नंदन नीलेकानी जी को भी इसके अंदर ओपन किया गया है। तो इसमें होगा क्या कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बिग जो बड़े बेहेमोथ हैं, उनका ऑल्टरनेटिव दिया जा रहा है हमारी लोकल किराना स्टोर्स और कंज्यूमर्स को, ताकि अभी हमारी जो ऑनलाइन ई कॉमर्स है वो सिर्फ ये दो मेजर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ही जो है डिपेंडेंट है। तो अगर हम ओपन सोर्स बना दें तो और जो है उस पर सारे किराना स्टोर्स या और जो है कंज्यूमर्स को जो उनको ऑप्शन दे जाए शॉपिंग का, तो जो इनकी डोमिनेंस है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की वो कम हो जाएगी। तो इसी के लिए ही जो है कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि ये ओपन सोर्स सिस्टम जो है इसको 100 सिटीज़ में लॉन्च किया जाएगा अगले 6 महीने में। इससे जो है हमारे कंज्यूमर्स को और रिटेलर्स को ज़्यादा चॉइस मिल सकेगी, और जो ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जो अपनी अभी डुओपोली चलाकर बैठे हैं, इनको पता लग जाएगा कि अब हमारा और भी कोई राइवल है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पवन हंस लिमिटेड। तो पवन हंस लिमिटेड आपको पता होगा कि हमारे जो है हेलीकॉप्टर्स चलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको 51% ओन करती है, और ONGC जो आपकी नेचुरल गैस वाली कंपनी है वो इसको 49% ओन करती है। तो गवर्नमेंट ने जो अपनी 51% की शेयर होल्डिंग है वो एक हाईएस्ट बिडर को बेच दी है। तो अभी होगा क्या कि जो मैनेजमेंट कंट्रोल है पवन हंस लिमिटेड का वो इस प्राइवेट कंपनी के पास चला जाएगा, ठीक है। सो इससे होगा क्या कि ऑफ कोर्स गवर्नमेंट चाहती है कि मैनेजमेंट कंट्रोल शिफ्ट हो, तो ये स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का एक तरह से गवर्नमेंट का टारगेट है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is CMCJ conference. So recently at the 11th joint conference of chief ministers and chief justices, the PM has pitched for the release of 5 lakh under trial prisoners. So he said that the people hope for swift justice from the state, and this should not be ignored, and that's why the issue of release of under trials must be taken care of. Okay, so he has suggested that a committee must be formed at the district level, led by district judge, to investigate each of these cases, and if possible then we should release these under trials on bails. So he also has suggested that the court hearings must be conducted in a language which is understandable to the litigants. So preferably local language should be the medium of communication at the local courts. And he has also explored that we should now start enacting laws which are easily understood by common citizens, so they do not have to rely on the professionals like lawyers or chartered accountants for understanding of the laws. Okay, so he has also outlined how timely and affordable justice to everybody is the prime duty of any state, especially a democratic state. So this is what the Prime Minister has said. So what is this CMCJ conference? Of course, the first such conference was held in 1953. Until date, 38 such conferences have been organized, and this, of course, this recent one is the 39th conference. It has been held after a gap of 6 years, and this conference is held for effective coordination of efforts between the executive and the judiciary, and to find ways how we can find a common ground for synergizing efforts to provide speedy justice to the citizens. Okay. So, of course, it is traditionally inaugurated and addressed by the Prime Minister of India, and that's what in that particular speech, the Prime Minister has outlined his vision for the justice in the country. And what is the issue of under trials? So actually, it is related to the pendency of cases. So about 4.7 crore cases in India are pending before the courts of law. Out of that, 70,000 plus cases are pending in Supreme Court only. Why there is so high pendency of cases? Of course, there is vacancy of judges, and there is even frequent adjournments. Why frequent adjournments can happen? Because there is lack of adequate oversight or any monitoring, tracking, or bunch of hearing of cases. So that's what happens. Judges often resort to adjournment of cases. So it is very easy to adjourn a case than to dispose of that case. Okay.
So what are the steps which have been taken? So of course, it is not just that the judiciary is responsible for it, because 40% of the litigation is related to the government. And at the government level, government has developed this justice app, so that judges can track how their case, how many cases are pending before them. The Supreme Court has been appointing judges to the higher courts, so that at least the vacancies of judges can be reduced. So, what is the way ahead? So, 112th Law Commission of India has said that fixation of judge strength formula must be there, so that at least minimum level of judges strength can be maintained, so that vacancies can be removed. And even we should, to have a good quality standard, we should introduce this all India judicial services. You know that currently we have this state level mechanism. We should replace it with all India judicial service, like we have in executive with UPSC. And the judiciary also should shun or curb the practice of seeking adjournments, and it should become an exception, and it should not be a norm. Okay, so speedy disposal of cases must be done. So what is the next topic, which is so next topic is bank consolidation. So recently RBI has released a report. It is titled Currency and Finance, and it has raised concerns about bank consolidation. So bank consolidation is either a big bank gulping down a lot of small banks, or a small many banks merging together to form a big bank. Okay, so this is called bank consolidation. So RBI has said that with such a big bank consolidation process, the market power of merged institution increases, and that's why less competition occurs in the market, because there is few choices for consumers. That's why non-competitive pricing of products can also happen, and that's why it can harm the interests of the consumers. Of course, it is important to strengthen the capital buffers of the banks, and sometimes we also require to merge them in order to infuse capital into them. But this just infusion of capital should not be the criteria, and we should also have better governance and risk controls in such banks, so as to avoid any collapse in the financial system. Okay, so why we're having this bank consolidation? Because in the Narsimhan Committee report in 1991 recommended that India should have a three-tier banking structure. Of course, there should be 3 to 4 large banks, which must be of international level, and there must be 8 to 10 national banks, which must be working through a network of branches throughout the country. And there should be local banks like regional rural banks, who should concentrate on region specific banking. Okay, so the next topic is hydrogen fuel cells. So Union Minister for Ports and Shipping has recently unveiled the government's plan for building hydrogen fueled electric vessels, because of course we want to reduce the carbon intensity of international shipping by at least 40% by 2030, and uh, increase it to the level of 70% by the year 2050. So that's why Cochin Shipyard Limited would be carrying out this project, and this fuel cell electric vessel would cost around 17.5 crore rupees, and 75% of that would be funded by the government of India. So, what are fuel cells? Like fuel cells, of course, they directly convert the chemical potential energy into electrical energy, and in that process, there is just simple byproducts like water, electricity, and heat, unlike the combustion engines, which produces harmful chemicals or harmful gases, and that's why it is not environmentally sustainable or environmentally friendly. So this fuel cell is basically they are these also have high efficiency, and they can be used as in transport vehicles, and even to produce electricity, so that we can store that electricity and use it in case of a failure of electricity grid. Okay, so there are several advantages of this technology. Like I've said, that it is converting the chemical energy directly into electrical energy, so it is made more efficient than combustion engines. So, and their emissions are just water and a little heat, so it is environment friendly also, and it is more reliable than traditional engines, because there are no moving parts in these fuel cells. Okay, so basically they are environment friendly, zero emission, and they are direct current power source. That's what makes these fuel cells much better than combustion engines. Okay,
So the next topic is East Kolkata wetlands. So recently, a CAG report has pointed out that illegal construction and violations of environmental norms in two Ramsar sites of West Bengal, that is East Kolkata wetlands and the Sundarbans, has costed dearly to these two regions. And this East Kolkata wetland, of course, it lies in the eastern fringes of Kolkata, and it is an area of about 12,500 hectares. It is a peri-urban ecosystem, and the report says that because the state could not delineate the boundaries of these two regions, therefore uncontrolled land transfer occurred, and this land was the character of this land was changed, and even that's why the natural ecosystems were destroyed to make construction activity. And even the effect of it is that water bodies have started drying up and they were filled illegally, so that construction can be made upon that. Okay, so the next topic is Atal New India Challenge 2.0. So recently, the first phase of the second edition of Atal New India Challenge was launched. So it is basically a program of Atal Innovation Mission, that is Niti Aayog, and it aims to seek, select, and support those technology-based innovations which can solve the challenges of national importance, okay, and of societal relevance. So it will, of course, this ANIC program will support innovations which are being conducted in the areas critical to India's development and growth, like education sector, health, water and sanitation sector, agriculture, food processing, etc. So that is what Atal New India Challenge 2.0 is. Okay. So the next topic is Open Network for Digital Commerce. So recently, the government of India has unveiled a plan whereby they will be formulating this open source online e-commerce network, and it will be extended to 100 Indian cities, so that millions of kirana stores and consumers will find an alternative to the big behemoths like Amazon and Flipkart. So basically, the government is aiming to break the duopoly of Amazon and Flipkart in the e-commerce sector in India. That's why they are making this open source system, so that anyone can access this and anyone can customize this into an e-commerce platform and utilize this data for the benefit of kirana stores as well as of consumers. So it will, of course, give a wide choice to all consumers and retailers, and it will be beneficial for the kirana stores or retailers also, because they will find an alternative to Amazon and Flipkart, who have been accused recently of malpractices. So that is what even you know that Nandan Nilekani ji, who is the architect of Aadhaar infrastructure, has also been consulted, and he will be leading this open network for digital e-commerce. Okay. So the next topic is Pawan Hans Limited. So this has been recently strategically disinvested. The 51% shareholding of the government has been transferred to this highest bidder, Star 9 Mobility. The Pawan Hans Limited was, of course, owned by the government of India as well as by the ONGC Limited, which is the Natural Gas Corporation, and the 51% shareholding of the government of India has been transferred to this Star 9 Mobility Private Limited. So that's why this transfer of management control would occur, and this would lead to strategic disinvestment. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.